There it is. Today I'll be doing more or less theoretical questions and some basics. So 1 to 50 I'll be doing today. 1 to 50, 50, then 50 to 100 and 50 to 100 to 150. Okay. Most of the sums are known only. We are just brushing up everything so that you all can get the understanding. And 150 के बाद में most of the sums are cancelled also. उसके बाद में सब कुछ cancel एक दो रहेगा. Okay, चलो आपको आता रहेगा. Please be with me. When white light passes through a prism, which color shows maximum deviation? Heck, which colors bends the most? Violet. Violet. Finished. We know deviation for violet is greater than deviation for. This is maximum and this is minimum. और यहाँ पर एक फॉर्मूला डिफाइन किया जाता है एंगुलर डिस्पर्शन. That is deviation of violet minus deviation of red. Okay, you know it. This is angular dispersion and this is the delta. This is delta R. This is red color and this is delta violet. This is violet color. You must be knowing all these things. This is white color, white light. This was done initially only. Okay. Here, beta. Yes. I'll ask you all. I have taught you all everything. Now I should expect answers from you all. When the power of the eye lens increases, power बढ़ेगा, मतलब focal length कम होगा. You know, power is 1/f ना बेटा. Yes, sir. Power बढ़ा मतलब f कम हो गया. f कम हो गया मतलब आंखों पे जिधर मिलना था ना उधर नहीं मिल रहा है, मिलना इधर है. ये रियल f है ना मेरा, बट मिल रहा इधर है. Are you getting it according to the question? F छोटा हो गया ना बेटा. ये डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? जहां पर शॉर्ट साइटेडनेस, इसको बोलते हैं मायोपिया. यस, जहां पर रेस पहले मिलेगा. तो बेटा कौन सा लेंस लगाते हैं इसको करेक्ट करने के लिए? कॉनकेव लगाते हैं. जब कॉनकेव रेस लगाएंगे तो ये फिर से इधर जाके इधर मिल जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Getting it or not? And it is focused at some far point, if you remember. Okay, yaad hai kya? Yes, sir. Okay, okay. Perfect, 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 sir. Perfect. Please be with me. We will be doing एकदम easy है. Question number 4 पर आता है. Rishi Balse is going to answer. Okay. The phenomena involved in reflection of radio wave by the ionosphere is what do you think? पढ़ा है क्या आपने? TIR होता है. यस, TIR. पूरा रेज रिफ्लेक्ट होगा ना, बाकी आधा भाग जाएगा. तो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है ना. मतलब सेंडिंग अ मैसेज, हाय हाउ आर यू, हाय हेलो, भाग गया और यू बच गया तो चलेगा नहीं ना वो. तो अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ टोटल इंफॉर्मेशन शुड बी रिफ्लेक्टेड बैक ना. हेलो, यू रिमेंबर मैन. देखो, अर्थ के ऊपर है ना लेयर्स होते हैं, इसको बोलते हैं टॉस्मी. TOSMI. Sorry. Okay. We are interested in the first is the troposphere, ozone layer, stratosphere, mesosphere, exosphere. ये दोनों लेयर को आइनोस्फीयर के नाम से जानते हैं. अब क्या होता है, हमारे जो डिश एंटेनास होते हैं ना, बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ रहता है ऐसा एंटेना, ये रेज जाते हैं इधर, ऐसे रिफ्लेक्ट होके दूसरी दुनिया में दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं. गेटिंग इट और नॉट?
So this undergoes the phenomena of PIR. PIR का concept क्या है? कि the angle of incidence should be greater than critical angle. And what is the critical angle? Sine inverse of 1 by mu. Do you agree with me? So all depends on the refractive index of the medium. बराबर है क्या? हेलो, ये medium का refractive index बढ़ना. The ray should be going from which medium to which medium? Denser to rarer. मतलब जैसे आप ऊपर जा रहे हो ना, ट्रोपोस्फियर, ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फियर, म्यू का वैल्यू कम होना चाहिए. रहेगा? यू अंडरस्टैंडिंग क्या बोल रहा हूं मैं? बिकॉज रे शुड बी गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर. तो ये म्यू ज्यादा होना चाहिए, ये म्यू कम होना चाहिए, तो ही तो रिफ्लेक्ट मारेगा वो. ओके ओके सर, इतना बहुत ज्यादा ज्ञान मत दो. ओके ओके फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन. हु इज देयर? 11 people are there, man. What nonsense is going on? ठीक है, करते रहो. चलो ऋषि, a passenger in an aeroplane, which part of the rainbow will be seen to him? जितना आप ऊपर जाएंगे ना बेटा, उतना रेनबो ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देगा. what is the shape of the rainbow? वाल से circle. Okay, so he may see primary as well as secondary rainbow as concentric circles. Concentric circles also he can see. So B is the answer. Okay, these all are important questions. Here. Yes, sir. Time pass hai. We'll do the 10th question. अच्छा चलो, ये वाला महक बताएगी. महक. Yes, sir. Then he your turn. Okay, a man of height 6 meter. He observes the image 2 meter height erect. Is the image diminished or magnified? 6 मीटर का हाइट है उसका, उसको दिख रहा है 2 मीटर. Diminished. Diminished. So it is erect, diminished. And you know erect जब भी होता है virtual होता है. बराबर है क्या? Yes, sir. Which type of mirror it is? Plane तो नहीं हो सकता है. Convex. Convex. Very good. Perfect. Okay. Virtual, erect and diminished. It is only one case of convex. याद है ना, convex में सिर्फ एक ही केस है. Convex में there is only one case. Okay. Question number. Yeah, your turn. The field of view is maximum for which mirror? अच्छा, मुझे convex mirror, because it is used in your rear view glass mirrors ना, in your cars. Yes. पढ़ा रहेगा. वो क्या करता है, छोटी चीज, पीछे एक बड़ा माउंटेन है तो भी छोटा करके बताएगा, पीछे एक बड़ा एलिफेंट है तो भी छोटा करके बताएगा. अरे अभी तो पीछे सम किया मैंने, 2 मीटर, 6 मीटर का आदमी 2 मीटर बता रहा है. तो यहाँ पर it is convex mirror. FOV is more, field of view is more, therefore it is used as rear view mirrors. ये याद रखना, ये सब चीजें थियरी बहुत ज्यादा पूछी जाती है रे ऑप्टिक्स से. थियरी बहुत ज्यादा पूछी जाती है. पहले के आई थिंक पहले के 40 क्वेश्चन थियरी है, तो ये कर लेना तो सब थियरी आपका खत्म हो जाएगा. ओके. 14th. ओके ओके, बाल से 12th वाला. चलो एकदम इजी है. There are certain materials developed in the laboratories which have negative refractive index. अच्छा, negative refractive index का मतलब होता है, positive refractive index मतलब क्या? Ray is going from rarer to denser and it will bend towards the normal. बराबर है क्या? हेलो, ये होता है इंसिडेंट रे, ये होता है रिफ्रैक्टेड रे. सही है, ये तो नॉर्मल है. यस. नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला उसका मिरर इमेज बना देगा उल्टा करके.
मतलब ये म्यू इज पॉजिटिव, म्यू अगर नेगेटिव होगा ना तो रे ऐसे चला जाएगा। यू गेटिंग इट? इसको बोलते हैं नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आंसर ये आता ही नहीं रहेगा तुम लोगों को, इसके लिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द सेम साइड, मतलब नीचे आ जाएगा उसके, सेम मिरर इमेज बताएगा। इमेजिन अ प्लेन मिरर केप्ट ओवर हियर, तो उल्टा बताएगा। ठीक है, याद रखना ये चीज को। 14th क्वेश्चन, ये भी आसान है। महक इज वेरी, Yes, sir. which eyes, our eyes are most sensitive to which color? Red. No. Taxi is which color? टैक्सी कौन सा कलर होता है? पीसीओ कौन सा कलर होता है? पीसीओ दिखता है, पीसीओ एसटीडी के बूट्स जो रहते हैं वो कौन से कलर के रहते हैं? येलो कलर। गेटिंग इट? ओके, तो इट विल बी येलो कलर। येलो कलर इज, आई थिंक सो, इट इज इन बिटवीन, तो इट विल बी 5500 एंगस्ट्रॉम। रेड कलर कैन ट्रैवल द मैक्सिमम, इट इज नॉट सेंसिटिव टू दैट। मतलब if you want to be noticed in a party now, you have to wear yellow color clothes, understand? Because they are very sensitive, so it is very catchy. Getting it? ये चीज है। देखो ना, इसके लिए मैं येलो से लिखता हूँ ना, तो समझ में आता है ना, अंडरस्टैंड? इट्स वेरी सेंसिटिव। जनरली इट इज नॉट दैट येलो, इट इज वो अपना कौन सा कलर होता है, टेनिस बॉल का कलर आता है ना, टेनिस बॉल का, वो सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी होता है। ओके, द फ्लोरेसेंट ग्रीन ना, द मार्कर, द हाइलाइटर में जो यूज होता है वो। ठीक है, ये सब याद रखना, इट इज द मेन कलर ना, तो दैट्स व्हाई ये सब याद रखना थियरी में, वरना उड़ जाएगा। हाँ, 14, the reason of shining of an air, shining always occurs due to PIR, shining of a diamond, shining of a bubble, shining always occurs due to PIR। रेज हमेशा अंदर घूमती रहेगी, ओके? जितना ज्यादा वो अंदर रिफ्लेक्शन करेगा उतना ज्यादा शाइन होते हुए दिखाई देगा। So shining always occurs due to PIR, remember this concept. Question number 15. So sir, what is this? We can also do this thing. चलो, कौन बताएगा? बाल से। What will be the color of the sky as seen from the earth if there is no atmosphere? Black. Because there is no, क्या भाई? Scattering, and intensity of scattering is inversely proportional to lambda raised to 4 ना, ये release criteria। हेलो, एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो स्कैटरिंग कैसे होगा? स्कैटरिंग नहीं होगा तो एटमॉस्फेयर विल बी, जैसे के लिए मून से अगर हम बाहर का एटमॉस्फेयर देखेंगे तो ब्लैक दिखाई देगा, बिकॉज मून हैज नो एटमॉस्फेयर। सब आता ही रहेगा यार, ऑल कैन मैनेज देन, राइट? आई शुड स्टार्ट विद सम्स देन। चलो और करते हैं थोड़े सम्स, सो दैट वी कैन ग्रेजुअली इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग। चलो, ओके, देखो भैया, महक विल टेल। महक, which of the following can form a virtual erect and magnified image? Magnified, Concave mirror. concave mirror, okay, and also वर्चुअल तो नहीं रहेगा ना, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज कहाँ आएगा? कॉन्केव लेंस में आएगा कि कॉन्वेक्स लेंस में आएगा? Concave lens. Good. कॉन्केव लेंस में कहाँ आता है? मैग्नीफाइड किधर होता है? कॉन्केव लेंस में मैग्नीफाइड होता है क्या कि कॉन्वेक्स में मैग्नीफाइड? अगर कॉन्वेक्स लेंस तो नहीं है, लेंस नहीं दिया हुआ। ओके 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 ओके, फाइन। कॉन्वेक्स लेंस में होता है ना, याद है, बिटवीन एफ एंड ओ पीछे जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कॉन्केव मिरर ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Rainbow is seen and all that thing is done. The sky would be appearing to be blue, all that, right? ठीक है,
20th question. चलो कौन बताएगा? A ray of light is incident in a separation of the medium at an angle of 45 degree and the refracted ray is 30 degree. What will be the velocity in medium? Mu का फॉर्मूला क्या है? किया बेटा sin I upon sin R. That is velocity in air upon velocity of light in medium. तो sin I कितना है? 45 sin 30. Velocity of light in air is 3 into 10 is to 8. Velocity of light in medium, I don't know. We can find. I'm not doing. You can do it. Okay. Easy एकदम. Got it? Yes, sir. Yes. 24. Listen. बाल से will tell. बाल से भाग गया. Right? हाँ इधर. याद है आपको लेंस में एक फॉर्मूला दिया था मैंने. Velocity of image is m square times v. याद आ रहा है? Along the principal axis. Hello. Yes, sir. An object approaches a convergent lens from the left of the lens with uniform speed. कितना है? 5 है. ये कितना है? 5 मीटर पर सेकंड. And stops at the focus. The image. कौन बताएगा? Image कैसे रहेगा? अरे भाई, अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, वो सब छोड़ो. देखो, कॉन्वेक्स लेंस है, ये फोकस है, ये 2f है, बराबर? कैन आई से इमेज सपोज ऑब्जेक्ट सपोज 2f पे, तो इमेज भी 2f पे, इतना तो मानते हो? अरे इतना तो मानते हो ना? कैन आई से ये इधर भागेगा, तो ये इधर भागेगा. महक बोलो, करेक्ट है? Yes, sir. Object will run towards the lens, image will run away from the lens with a rate of m square. What is the rate? M square. Achha, m square is not uniform. M will keep on changing now because m is v by u. No? M is not constant. M will change. So this is non-uniform. So answer रहेगा move away from the lens with a non-uniform acceleration. It is not non-uniform velocity. It is accelerated move. Because ये मालूम है, ये तो f तक जाएगा, ये infinity पे पहुंच जाएगा. So obviously he is having a very high acceleration, na? Because he has to reach what? Negative infinity. This is going from 2f to f only. That is going from 2f to minus infinity. So obviously that will happen. ये याद रखना. And m का फॉर्मूला मालूम है ना आपको? v by u. So as v is changing, u is also changing. Both are changing. Question number 26. Look carefully, now just pay attention over here. An object has image thrice of that of the original size when kept at 8 cm and 16 cm from a convex lens. Beautiful question. I don't want to solve anything. महक, सब convex lens में दो magnified images कब बनते हैं? पहला magnified image कब बनता है? ये f है, ये 2f है. Can I say if I keep the object between f and 2f? याद आ रहा है? ये बना मैग्नीफाइड, बराबर? ओके. कैन आई से क्वेश्चन में दिया ये 16 सेंटीमीटर. कितना है? ये आ चुका है पहले नीट के अंदर ऐसे टाइप के सम्स. केस 2 में क्या होगा? व्हेन विल अगेन बी मैग्नीफाइड फॉर्म? डू यू रिमेंबर व्हेन इट इज
in focus and put. Very good. They are telling you this is 8. देखो क्वेश्चन पढ़ो बाल से, तो एफ कितना रहेगा? अरे देखो ना यार, ये जो एफ है ना, ये Between कितना 8 रहेगा? and 16. हो गया आंसर, बस खत्म. बिटवीन 8 and 16. ओके, बिटवीन 8 and 16. अच्छा, कुछ कुछ क्वेश्चन में 11 cm दिया रहता है, तो 11 cm विल बी द आल्सो द आंसर ना. अरे सपोज 11 दिया है यार, बिटवीन 8 and 16 नहीं दिया, तो 11 मार्क कर देने का. यू नीड नॉट कैलकुलेट ओवर हियर. दूसरे क्वेश्चन जो आई हैव गॉन थ्रू, आई थिंक सो देयर इज अनदर क्वेश्चन, इट वाज गिवन 11 या 12 cm, जो भी, तो मार्क कर देने का, बिकॉज इट इज बिटवीन 8 and 16. अरे ऑप्टिक्स में ना लेक्चर बैठना पड़ेगा. ओके, ज्यादा होशियारी मारने जाएंगे तो 5 क्वेश्चन सीधा उड़ जाएगा. चुपचाप लेक्चर बैठ जाने का. Now, because repetition is very much required. Acha, if the man had only one eye, then things will be seen to be two-dimensional. Huh? Things will be seen to be two-dimensional. ये एक चीज है. And visible region कम हो जाएगा ना, because intensity of light entering will be less. Your brain. Answer will be B and important है ये सब याद रखना भाई. थियरी पूछा जाता है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स है. Again and again I'm telling you. NCERT theory extract है ये सब. Okay, this question was done. Here will tell me. Here एक लेंस को अगर पानी में डाल देंगे तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा, याद है ना? Yes, sir. ये ऐसे था, इसको पानी में डाल देंगे तो ये कन्वर्जेंट लेंस है, ये क्या बन जाएगा? Divergent. ये डाइवर्जेंट हो जाएगा. A transparent plastic bag filled with a concave lens. Now the bag is completely immersed in water. क्या हो जाएगा? Concave का क्या बन जाएगा? Convex lens. It will change the nature provided बाहर वाला mu is greater than अंदर वाला mu. Very easy because we know. That's why. आप खुद से करने बैठो ना, पता चलेगा आपको कितना टाइम लगता है. चुपचाप एक डाउट सॉल्विंग भी मिस नहीं करने का. ओके, एक भी डाउट सॉल्विंग मिस नहीं करने का, एक भी लेक्चर मिस नहीं करने का, एक भी क्रैश कोर्स मिस नहीं करने का. दिस इज फॉर योर बेनिफिट. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. ठीक है. ओके, Nag will tell. Nag, a mark at the bottom of the liquid appears to be rising by this much. Can I say this is the shift? अरे याद है ना, एक कॉइन रखा है पानी में कॉइन रखा है. What is the formula for shift? याद है? Real depth minus apparent. Very good. So can I say this is the D? Apparent depth याद है ना? It's D by mu. तो shift क्या होगा? Do you agree? अरे याद आ रहा है? तो शिफ्ट कितना दिया है क्वेश्चन में? Into 1 meter. डेप्थ कितना है? 1 मीटर. तो सर व्हाट इज दिस? म्यू मिल जाएगा. ओके, आई एम नॉट डूइंग ना. ठीक है. This was done initially also. 10 by 9, you will get 10 by 9. Bal say, you don't tell anything, man. Come on, say fast. Hi. Hello, another question, man. Under minimum deviation condition in a prism, if the ray is incident at an angle of कितना degree? 30 degree. 30.
The angle between the emergent ray and the second refracted ray is how much? अब देखो इधर मेरी बात सुनो. ओके ये जाएगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30 डिग्री. ये ऐसे है. ओके ये इमर्जेंट रे. ओके मिनिमम डिविएशन का क्या मतलब है बल से? I is equal to E. वेरी गुड. आई इज इक्वल टू ई ये भी बोल सकते हो. मतलब ये 30 डिग्री हुआ. सही है. Yes. पर पूछा ये नहीं है. पूछा आपको क्या है? एंगल ऑफ डिविएशन बिटवीन whom and whom. पढ़ो बराबर. Between the emergent ray and the second refracted ray. Who is the second ray? बेटा this is the first ray, this is the second ray, this is the third ray. Second ray ऐसे निकलेगा सीधा. तो ये एंगल मांगता है क्या? बराबर है क्या? अच्छा आई नो मिनिमम डिविएशन केस में रे इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म. मालूम है क्या? मतलब जो सेकंड रे है वो हॉरिजॉन्टल है. अरे भैया बोलो. Yes, sir. मुझे ये एंगल चाहिए. अच्छा बोल सकते हो. इमर्जेंट रे is 30 degree with respect to normal. कैसे करेंगे? Can I see ये 90 है? अरे नॉर्मल है ना भाई. Yes, sir. कैसे निकालेंगे? कोई बता सकता है कैसे करेंगे? बोलो. मुझे ये मांगता ही है. This is the deviation between the horizontal ray and the refracted ray. तो ये तो 90 है. उसमें से ये 30 है तो ये बना 60. बना कि नहीं 60? यस और नो? हेलो. Yes, sir. आपको चाहिए ये चाहिए ये. Okay. 90 30 60. Angle between the emergent ray and the second refracting surface चाहिए. सॉरी second refracting face नहीं है. वही मैं देख रहा हूँ यार. ये कैसे मिलेगा? second refracting surface मतलब क्या चाहिए? यही तो चाहिए. अरे भैया this is the second refracting surface ना. बोलो. This is how many degree? 60 डिग्री होगी ना. एक बार फिर से देख लेते हैं. See, try to do it again. Ray passes with angle of incidence 30. Ray is parallel to the base of the prism. Emergent ray is also 30 because I is equal to E. They have asked you the angle between the emergent ray and the second refracting surface. So obviously we know this is 90. This is 30, so this has to be 60. Yes. Second refracting ray के बीच में नहीं पूछा है. Second refracting surface के बीच में पूछा है. ये वर्ड है. Because this is the first refracting surface. No? And this is the second refracting surface. Come on, enough now. Fast. 32.
prism can have maximum refracting angle. Remember, I had told you one thing, K prism hota hai, maximum A, this is A. What are the condition for no emergence? क्या याद है आपको? A should be greater than 2C, याद है? Hello? मतलब क्या होगा अगर ये जो A है greater than 2C हुआ तो रे इधर जाएगा and then it will turn back. It will undergo the phenomena of what, sir? PIR. So maximum refracting angle which it can have is 2C. Because beyond that, the prism will not allow any ray to enter outside, na? It will only undergo TIR. तो TIR अगर अंदर हो गया तो prism का काम नहीं करेगा ना फिर. Prism का काम ये रहता है कि dispersion करे ना. Dispersion मतलब emergent ray has to come out. If the emergent ray is not coming out over here, that means A is greater than 2C. Okay, look over here carefully. A beam of light composed of red and green rays is incident obliquely at a point on a face of a rectangular glass slab. When coming out of the opposite parallel faces, the red and the green ray emerge. बोलो भाई. See, पहले क्या बोला है? Beam of light composed of red and green rays are incident obliquely at a point on the face of a rectangular glass slab. तो यहाँ पर एक glass slab है. I'm throwing green ray and I'm throwing a red ray. When coming out of the opposite parallel faces, then the red and the mu gray ray emerge from. Mehak, Yes, who's sir. going to bend more? Who's going to bend less? Green will bend more, red will bend less. So can I say this is bend more. So he'll bend towards the normal. ऐसे bend हो गया. And red is not going to bend only. Suppose it's not going to bend only. बराबर है? Suppose ऐसे पकड़ते हैं. When it emerges outside, बाल से क्या होने वाला? They will emerge in two different parallel directions or two different non-parallel directions. क्या Non-parallel. बोलते हो? Why do you say so? Because the deviation is different. But you know one thing, that when it comes out of the glass slab, there is only lateral displacement between this ray and this ray. याद है? हेलो. Yes, sir. वैसे यहाँ पर भी क्या होगा? There will only be a lateral displacement between this ray and this ray, ना? But they will emerge. क्या बोलते हो? Parallel. So if they are initially parallel, they will finally also be parallel. अच्छा, if they were initially not parallel, then they will not emerge parallel. बराबर है क्या? अरे Yes, अगर sir. पहले दोनों पैरेलल थे तो बाद में भी पैरेलल रहेंगे. ओके, अगर पहले पैरेलल नहीं थे तो बाद में भी पैरेलल नहीं रहेगा. बट देयर विल बी अ लैटरल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस रे. ओके, तो स्टार्टिंग में बोला नहीं है कि स्टार्टिंग में दे आर पैरेलल और नॉट. तो वी विल कंसीडर देम नॉन पैरेलल ओनली. सो आंसर विल बी ए ओनली. समझा क्या? अगर स्टार्ट में पैरेलल है तो एंड में भी पैरेलल है. अगर स्टार्ट में पैरेलल नहीं है तो एंड में भी पैरेलल नहीं है. They are not told anything, they are parallel, so we assume that non-parallel, so they are emerging in non-parallel directions because we don't know about the start what they are speaking about.
Understanding what's happening. Who's going to answer? Okay, listen. Object is placed 50 centimeter from a concave mirror of focal length 10. Mehak, focal length ke outside, focal length ke inside. Where is it? Object. Magnified. Focal length is how much? 10 na beta. Look. 10 दिया है कि नहीं? Hello. Where is the object? Beyond focus. Beyond focus. This is 15. Can you tell me what is going to happen? Magnified and Inverted. Inverted, no? yes, sir. याद है क्या? Magnified and inverted. याद है ना? M is greater than -1. If you remember. याद है हम लोग ऐसे बोलते थे M is -2. If you remember, Baba. Hello. Yes, sir. Ray diagrams is must. You should know. -2 या equal to -2 जो भी मैं लिखता था. This is only imagine, just assume. It's magnified and inverted. A is the answer. (36) When a lens of refractive index N1 is placed on a liquid of refractive index N2, then the lens look like to be disappeared. Disappeared matlab kya? Ray is not bending. Ray is not bending when N1 will become equal to N2. Because when lens का देखो ना, lens है N1 और ये बाहर का मीडियम है N2 और N1 और N2 सेम है, तो रे जो आएगा वही जाएगा. ऐसे होगा. तो लेंस दिखाई नहीं देगा ना, बिकॉज इट विल अपीयर टू बी सेम मीडियम ओनली ना. ऐसे लगेगा सेम मीडियम है, बिकॉज रे बेंड होगा तो ही तो पता चलेगा. लेंस ही नहीं है, तो इट विल अपीयर टू बी ट्रांसपेरेंट व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आर द सेम. Okay, we'll come to 40. A lot of theories I have done before also. We'll do till 60 at least. फ्राइडे को लेक्चर बैठ जाना, प्रॉब्लम हो जाएगा. अच्छा, बिफोर डूइंग दिस, यू रिमेंबर 37 आई हैड डन अ कॉन्सेप्ट ऑन. सुनो अभी मेरी बात. रिमेंबर देयर वाज ऑब्जेक्ट and there was image, and I had told you there were lens at two positions, L1 and L2, such that in first case you get magnified image. This is U and this is V. And second case में what do? You interchange the positions. मतलब इसको V बना दो और इसको U बना दो, so that two magnified images are obtained on the screen. So object ka value is root of I1, I2. If you refer the synopsis, I had done this thing. So O was root of I1, I2. That is the root of X1, X2. Refer synopsis which are given. ध्यान रखना ये चीज का. 40th क्वेश्चन पे आते हैं. ये सब इजी है. रे डायग्राम. Two beams of red and violet color made to pass separately through a prism A60 in minimum deviation position. The angle of refraction of the prism. You know, in minimum deviation,
Remember, R1 is equal to R2 is a common name R. And A will become, remember, R1 plus R2, which is equal to 2R. So A is given as 60, which is 2R. So R will become what, sir? 50 for both the colors. It doesn't matter. Because this thing is independent of mu, ना? Mu पे थोड़ी depend करता है. Minimum deviation का काम हो रहा है. तो चाहे वो कोई भी कलर हो, A is 2R only. Minimum deviation पे A is 2R. Because the ray has to be parallel to the base of the prism. चाहे वो red color हो, चाहे वो green color हो, चाहे कोई भी color हो. First, here, what is Rayleigh's intensity of scattering proportional to? Inversely proportional to lambda. Can I say it is directly proportional to frequency raised to 4? Yes, sir. Yeah, आया था exam में, NEET exam में था ये. Okay. Object is placed at a distance u from an equiconvex lens. The distance between the object and the real image is minimum. Minimum distance कितना होना चाहिए महक? मैंने बताया था, 10 बार बता चुका हूँ. 4f. 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 2f यहाँ से, 2f यहाँ से. Minimum distance between the object and the image should be 4f. Because when it is at 2f, image will also be formed at 2f. So minimum distance between the object and the image is. अच्छा u पूछा है खाली. Yes, sir, it says U. हाँ, sorry. No. 2f. Okay. We assume standard answers and directly start marking everything. Okay, चलो. ठीक. बाल से कुछ फॉर्मूला आता है आपको? रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला बोलो. माइक टेलीस्कोप का. सर. याद है थीटा वाज 1.22 लैम्डा बाय डी. इतना याद है क्या रिलीज क्राइटेरिया? Yes, sir. रिजॉल्विंग पावर याद है? इसका उल्टा था. जो कम से कम देख पाए उसका रिजॉल्विंग पावर सबसे ज्यादा. सो डी अपॉन 1.22 लैम्डा. सो रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा. अपर्चर मतलब ये, दिस इज द डायमीटर ऑफ द अपर्चर. तो डी बढ़ाएगा तो रिजॉल्विंग पावर भी बढ़ेगा. तो अगर ये डिक्रीज किया है तो रिजॉल्विंग पावर विल आल्सो डिक्रीज. दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट ना. आपको लग रहा है ये सब इजी है, ये सब आता है एग्जाम में. फॉर्मूला पे बहुत ज्यादा मेहनत करो इसमें, एंड थियरी पे. रेनबो, डिस्पर्शन सब पूछा जाता है. आई एम नॉट मैड दैट आई एम पुलिंग दिस चैप्टर फॉर 1.5 months. बाबा ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बता रहा हूँ. और लोगों का मार्क्स इसमें ही चला जाता है. And telescope has objective of focal length FO and FE. What is the magnification? Magnification of telescope is FO by FE. If you remember, 20. Done, sir. FO by FE, FO by FE, FO by FE. Forty-sixth question. ये इंपॉर्टेंट है, इसको 10 बार मार्क करो. ओके, लुक ओवर हियर बेटा. सपोज एक ग्लास स्लैब है. अरे याद है इधर जाता था, उसका स्पीड था c. जब वो ग्लास में घुस जाएगा तो उसका स्पीड हो जाएगा c by mu. And let the thickness of the slab be x. So time taken to pass through the glass slab will be distance by speed in that direction. अरे भाई ग्लास स्लैब का डिस्टेंस कितना है? x है. अंदर स्पीड कितना है? c by mu है. तो टाइम टेकन टू पास थ्रू अ ग्लास स्लैब क्या रहेगा? mu x by c है. स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखो 10 बार. Time taken by light to pass through a glass slab is mu x by c, 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 mu x by c. Why are you repeating? Because this comes. mu कितना है? 1.5. x का वैल्यू कितना है?
कितना थिकनेस है भाई? UMM कितना है? UMM वॉट एवर MM इट इज मैन, कितना MM है? तो जितना भी MM है दिया है क्या? 4 into 10 है, 4 mm है, 4 into 10 is to -3, and C का value remember ना is 3 into 10 raised to 8. So you get this answer of 46 is B, that is 2 into 10 raised to -11 seconds. -11 है ये, -11 है, B आएगा B, 2 into 10 raised to -11 seconds. Whatever, mu x by C has to be remembered. It is very, very important. Time taken to pass through a glass slab is mu x by C, mu x by C, mu x by C, mu x by C, mu x by C. Now we are starting with some sums. We'll do till at least till 60 तक तो करना ही है, ठीक है ना? We'll do 5-6 sums. I'll do more. 48 पर आता है, ठीक है? Starting with the sums now. We have combined convex lens of focal length and concave lens of focal length F2, F1 and F2. The combination is found to be F. The combination of these lenses behave as a concave lens. अच्छा, दो लेंस को जोड़ते हैं ना मैं, तो कौन सा फॉर्मूला बनता है? 1/F is 1/F1 plus 1 F2. अच्छा, this answer I want is to be which lens? concave. Concave. मतलब this answer should be Negative. negative. Now look carefully. Look carefully. Yeah. मतलब the resultant answer should be negative. हाँ. Suppose this is convex. Convex का focal length क्या होता है? Positive. Positive होता है. मतलब ये positive है. Suppose this is concave. इसका focal length क्या होता है बेटा? Negative. Can you tell me F1 और F2 में से छोटा बड़ा कौन होना चाहिए mathematically? Because if you know that if this is smaller, then this number will dominate. If the denominator is choto, the whole number will be bado. Hello? Yes or no? Yes, sir. We want this number only to dominate, na? The negative answer should dominate, right? Then only the answer will be negative. Hello? Are you getting it? Yes, sir. So who should be smaller? F2. F2 should be smaller than F1. Got it? Yes or no? Because if this Yes, sir. number is choto, this whole thing will be bado. And if this is bado, this is negative. So if this is negative, the whole answer will dominate, right? Otherwise, it's not possible. तो थोड़ा सी दिमाग लगाना पड़ेगा आपको. Got it, sir. याद रखना. Okay. Balse, my friend. Okay, tell me, 50th question. Light travels in two mediums A and B at the speed of this much and this much. Then the critical angle. What is the formula for critical angle? Sin C is what? याद है mu R by mu D? Hey, याद है VD by VR? अच्छा, डेंसर का वेलोसिटी छोटा होता है बड़ा होता है? डेंसर का वेलोसिटी छोटा होता है बड़ा होता है? डेंसर लेसर. दोनों में से लेसर नंबर कौन सा है? 1.8. 6 3s are 6 4s are 3/4. Sine inverse of 3/4. So C is sine inverse of 3/4. आंसर D है. इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना ये सब फॉर्मूला को. Couple of 4 or 5 questions and then I'll leave you all. I don't want to harass you all. We'll meet on Friday again sometime. Okay, then next week.
51 मैक Yes, sir. याद है मैंने एक क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, एक क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन आपको याद है, लेंस होता है व्हेन व्हाइट कलर इज पास्ड हु विल बेंड द लीस्ट, रेड, and who will bend the most? Violet. This was violet. This was called as longitudinal chromatic aberration. That was FR minus FE. Do you remember? Yes, sir. Which was omega FY. This I have made you. Okay. Mug up. Okay. याद रखना ये चीज है. The focal length of thin convex lens is 1.005. मतलब ये 1 point कितना है 100.5 है और ये वैल्यू कितना है 99.5. तो longitudinal chromatic aberration कितना हो जाएगा 100.5 minus 99.5 is omega F yellow. Yes or no, sir? हेलो Yes, sir. कितना हो गया ये 1 हो गया. बराबर है क्या भाई? हेलो. अच्छा अभी क्या चाहिए मेरे को यहाँ से, मैं क्या चाहिए आपको यहाँ से, व्हाट डू यू रिक्वायर? Dispersive power of the lens. तो हु इज अननोन ओवर हियर? FY. ये अननोन है ना. अच्छा ये कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान देना अभी इधर. एफ वाई इज रूट ऑफ एफ बी इंटू एफ रेड. F is F square is F1 F2, so Fy is root of here. So 1 will become omega root of Fy is 100.5 into 99.5. So approximately 100 होगी ना. हेलो अरे भाई ये approximately 100 ही तो आया रूट निकाल के. yes or no? Yes, sir. तो 100 1 upon 100 0.01. got it? This is how you do it. Yes. Important है, इसको मार्क करो. important. ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो टाइम पे तो आपको सूझने वाला ही नहीं है कुछ भी. हाँ फिफ्टी टू. ये देखिए भाई ऋषि, two mirrors are placed at right angles to each other. थीटा कितना है दोनों के बीच में? 90. नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड. याद है मैंने बताया था सबसे पहले क्या निकालने का? N. 360 बाई थीटा. याद आ रहा है, याद आ रहा है आपको? कितना हो गया ये? 4. 4 इज Four. इवन नंबर और ऑड नंबर? Even. इवन नंबर में नंबर ऑफ इमेजेस कितने होते हैं बेटा? N minus 1. Perfect. 3. Got it. Refer synopsis. I had given you the trick. Please. Okay. याद रखना ये सब चीजों को. ऑड नंबर हुआ तो सोचना पड़ेगा ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है कि नहीं है, वो सब देखना पड़ेगा. सब याद रखना, सब क्वेश्चंस आते हैं इसमें, कुछ भी मिस नहीं करने का. ओके लिसन, मैं यू टेल नाउ. Yes. ये देखो ये सेम सम. टू गेट हाउ मेनी इमेजेस? 90. 90. अरे वेरी गुड. 3 इमेजेस चाहिए तो 90 होना चाहिए ना. अभी तो किया था भाई. Yeah, tell me. 2 mirrors kept at 60 degree. तो 360 by theta कितना होता है? 360 by 60 is 6. 6. 6 is even odd. Even. Even तो number of images क्या होगा? N N minus 1. That is 5 ना. Yes. Refers the trick, huh? Please, it will help you very much.
Okay. 56th question is standard result. Look carefully. Angular resolving power of a human eye. Okay. Always remember limit of resolution of human eye is 1 minute. What is 1 minute? 1/68 degree. ठीक है? मतलब ये आंखें है ना हमारी, ये एक ऑब्जेक्ट है दूर. क्लियर है क्या? ये इतना एंगल फॉर्म करना चाहिए. या तो दूसरा तरीका, 2 अक्षर है आपके सामने ए बी, यू कैन सी देम ए बी एंड डिफरेंटली. ऋषि दिख रहा है, ए अलग से बी अलग से दिख रहा है ना? Yes, sir. क्योंकि आपकी आंख पे ये जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 1 मिनट. सही है क्या? हेलो, तो समझ रहे क्या? मगर इन दोनों को बहुत पास लेकर आ जाऊंगा, ऐसे ऐसे कुछ बहुत नजदीक आ जाए तो क्या होगा, एंगल कम हो जाएगा उसका. और एंगल अगर 1 मिनट से कम हो गया तो वो दोनों चीजें एक दिखाई देंगी. अरे यार ये देखो बुक देखो, ये बुक देखो, मैं बोलूं पढ़ो यहाँ से, है ऋषि, रीड रीड रीड, कम ऑन रीड. दिख रहा है? यू कैन सी ना? सी और नॉट? तो कुछ दिखता नहीं है. Whatever. If you take a book and you place it very far away, more than 50 centimeter, and if someone tells you to read, you cannot read. Why? आपको तो सब काला काला दिखेगा ना? Yes or no? So that is when your eyes are not being able to resolve. तो मतलब limit of resolution which is there is less than 1 minute. उससे कम हो गया तो आपको नहीं दिखाई देगा. अच्छा, resolving power is 1/theta. ये हम बता चुके हैं आप. So it will be 1 upon, getting it ना, 1/68 degree. अरे याद है क्या? When I convert this into radian, can I multiply by pi by 180? And the answer of this, you will get it as 3.4 into 10 raised to 3 radian. ये याद रखना है आपको. This is resolving power of human eye. 3.4 into 10 raised to 3. मतलब ये आंसर ए में चला जाएगा. 1/68 डिग्री का उल्टा. Okay. Meg, do you remember resolving power of microscope? I've done everything here. 2 mu sine. हाँ बोलो. 2 mu sine alpha by lambda. Yeah, this alpha was the semi-vertical angle of the cone. Can I say it is inverse to lambda? If red is replaced by blue light, lambda कम किया बढ़ा दिया, less or more? Red पहले था, उसका lambda ज्यादा होता है. Lambda of red is more than lambda of blue. So if you are replacing red with blue, what is going to happen? You are decreasing the Wavelength. so resolving power will. Increase. That's why I told you, na, all your screens will have blue hue on the screen. आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल होता है ब्लू कलर का होता है, रेड कलर का नहीं होता है. लास्ट टाइम बताया था मैंने. You don't know all this, right? You have forgotten everything. Okay. Sixtieth question, last question. In an astronomical telescope, oh sorry, just doing the last question.
अच्छा, you know the formula for telescope when the final image is formed at infinity? टेलीस्कोप के लिए बेटा एक ने सब फॉर्मूला याद किया रहेगा. एल इंफिनिटी क्या होता है? FO plus FE. Plus मैग्निफिकेशन फॉर्म्ड एट इंफिनिटी क्या रहेगा? FO by FE. FE. ये तो इजी है भाई, तो यही तो यूज कर रहे हैं. देखो अभी क्वेश्चन में क्या दिया, एंगुलर मैग्निफिकेशन 5 दिया है. The separation between objective and the eyepiece is 36. Separation between eyepiece and objective मतलब क्या? ये लेंथ is 36 and मैग्निफिकेशन कितना दिया है? 5 दिया है. यस और नो? बेटा दो ऐसे नंबर फाइंड करो जिसको ऐड करेंगे तो 36 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा. बोलो आंसर में से कौन से है? हेलो ऋषि, क्या आंसर है? D. ऐड करेंगे 30 डी ना, ऐड करेंगे कितना है? बी के सी के डी क्या? D. ऐड करेंगे तो 36 आना चाहिए, डिवाइड करेंगे तो 5 आना चाहिए. यस, डी इज द आंसर एंड बोथ ऑफ देम हैव टू बी कॉन्वेक्स. तो दोनों पॉजिटिव ही रहेगा. कॉन्केव लेंस तो किस में भी इस्तेमाल नहीं करते ना, सिर्फ गैलीलियन में इस्तेमाल करते हैं जहां पर माइनस साइन आता है. रिमेंबर? I only say yes. I only remember. So 60 questions we have completed. Tomorrow नहीं, Friday को I'll be doing till 100, 110, and then last lecture में complete कर देंगे इसको. It was just a brush up of all the formulas. Nothing new was done. Okay. Thank you. Take care. Bye. Thank you, sir.